बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुम। लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने आप को कैसे सिक्योर रखें? देखिए, अगर कोई जिस तरह पिन होती है, प्रोसेसेस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, एसएससीपी के पास जैसे मैंने बताया कि डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट खत्म करके एक पिन जनरेशन पिन है। जनरेट हो गई। एसएससीपी के पास जब मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि आपके पास एक वैलिड सीएनआईसी नंबर होना चाहिए और आपके जो मोबाइल नंबर के जो के अगेंस्ट सिंक्ड हो उसी सीएनआईसी के ऊपर मोबाइल नंबर आपका इशू हो। तो जो ही आप हमारे पास यूजर क्रिएट करते हैं तो हमारा सिस्टम नादरा से और पीएमडी से कनेक्टेड है। वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे वेरीफाई करता है और हमें ये बता देता है यहाँ ये जेन्युइन मुर्तजा, ये दिस सिम इज ऑफ मुर्तजा एंड दिस सीएनआईसी इज ऑफ मुर्तजा। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है कि इसको सिर्फ ये नहीं है कि मुर्तजा हमारे पास आया सीएनआईसी लेके और उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और हम इसको ओके कर देते हैं, बल्कि ये इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए हमने इसको नादरा से और पीएमडी से वेरीफाई किया हुआ, लेकिन वो विद इन बिलिंग ऑफ नो सेकंड्स वो काम होता है, फुल प्रूफ और वो मुर्तजा को नहीं पता चलता कि बैक एंड पे क्या हो, लेकिन चेक हो चुका होता है। अच्छा भाई, ये एहतियात करनी है। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये तो हमने मौजूदा हालात के ऊपर बात कर ली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हो गया। एनी अपकमिंग चेंजेस और इनिशिएटिव जो कि जिनको बिजनेस को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए नियर फ्यूचर में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, एनी चीज जो आपकी नजर में हो? देखें, चैलेंजेस तो नहीं कहने चाहिए, देखें अभी हमारा बल्कि चेंजेस कहना चाहिए। एसएससीपी का जो ई सर्विस सिस्टम है जिसके ऊपर आप लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वेबसाइट पे हमारे आते हैं www.sscp.gov.pk, वहां से आप लॉगिन हो जाते हैं ई सर्विस के ऊपर। अब एसएससीपी एक और रॉबस्ट सिस्टम ला रही है जो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन मंथ्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा। न्यू वर्जन ऑफ द it's a new version of the technology. It is more user friendly, more easy. Data is stored in a more better way and captured in a more. Once you registered as when you get yourself into the system, you are registered. Whenever you incorporate a company, your data would be retrieved from that system. You don't need to punch in data again and again. And the reporting to the SCCP is also more systematic, convenient, easy, and you can summarize the information in a more better way through this system. So it is a excellent system. It is a very smooth system, and there is an element of some extent of AI also in this system. So you are going for AI, artificial intelligence. We are looking into the AI intelligence into this system to the extent of the name availability. It's not 100% AI, but it will help us in resolving the issues of the name availability also. क्या होगा कि मैं अगर उस नए सिस्टम में जाता हूं और वो AI मुझे कोई नाम सजेस्ट कर देगा? नाम सजेस्ट से ज्यादा ये आपको बता देगा कि आपका नाम रिजेंबलिंग इन कंपनीज के साथ है, वो एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको बता देगा ये है कि आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप ये नाम लेंगे, ये पॉसिबिलिटी आपको रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स देन एंड देयर वो बता देगा कि इफ यू आर कमिंग टू द ब्रोकर है तो आप इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट एज अ ब्रोकर देन कम टू दिस सेक्टर। अच्छा, लेकिन अभी आप कह रही हैं कि ये सिर्फ नेम अवेलेबिलिटी की हद तक है, नया सिस्टम जो है वो नेम अवेलेबिलिटी के ऊपर ये चीजें हमें हेल्प करेगा। और बेसिकली अगर मुर्तजा ने एक दफा अपना सीएनआईसी डाल दिया, किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया, तो सिस्टम हमें रिट्रीव करके बता देगा कि मुर्तजा इज ऑलरेडी हैविंग अ कंपनी मुर्तजा फार्मास्यूटिकल्स, इफ नो इज इनकॉर्पोरेटिंग अ मुर्तजा रियल एस्टेट, तो सो वी विल हैव अ फेयर आइडिया कि मुर्तजा इज ऑलरेडी इन आवर सिस्टम एंड ही हैज आल्सो वो 2, 3, 4 कंपनीज एंड आल्सो अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी based on your CNIC, and he has all shareholding
working in other these companies. This all information can be retrieved through this और system. फॉरेनर्स के लिए आप लोग पासपोर्ट को देखते हैं? फॉरेनर्स के लिए पासपोर्ट को पासपोर्ट देखते हैं। सो अब कोई चीज अनचेक्ड या अनअटेंडेड नहीं रह सकती, अनचेक्ड और अनअटेंडेड नहीं रह उसमें नाम और उसके साथ क्योंकि विद आपको हिस्ट्री सारी उसकी जो है ना, with one click you will retrieve the history of that person के where he is in our system basically. ऑलराइट। अच्छा एक चीज और बताइए, कंपनी बन गई, कंपनी का नाम हो गया, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, सारी चीजें ओके हो गई, कंपनी बनने के बाद की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अक्सर लोगों से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं सर कंपनी तो हमने बन गई मगर बाद में बड़ी हैसल है हमारे लिए। ये कंपनी बनाने के बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी आदमी को पूरी करनी होती है, किसी कंपनी को पूरी करनी होती है? जो वर्ड हैसल है ना, आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन। दैट्स अ गुड पॉइंट कि हैसल नहीं है। देखिए जब आप देखिए आप मुझे बताएं, आप नादरा के पास जाते हैं अपना आईडी कार्ड, तो 5 साल के बाद आपका आईडी कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है ना। एसएससीपी के पास एक दफा कंपनी बन गई वो सारी फॉर एवर, इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन, यू नीड नॉट नीड एनी रिन्यूअल की जरूरत, कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। आपको एनुअली एक आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करवाना होता है जिसमें बताना होता है कि कंपनी का नाम अभी भी यही है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यही है, ये कैपिटल है, अगर इंक्रीज कर दिया तो उसमें इंक्रीज अमाउंट बता देंगे, पेड अप कैपिटल, कौन सब्सक्राइबर्स है, केयर शेयर होल्डर्स हैं। और अगर आपका 3 मिलियन तक कैपिटल है, स्मॉल कंपनीज है और आपका कोई चेंज। My degree is recognized worldwide. It gave me great opportunities and I made valuable connections. I recommend this scholarship to everyone. Studying in Hungary gives you top-notch education and a taste of rich culture. It changed my life and it can change yours too. Sakhar IB University has emerged as a beacon of light for the unprivileged, talented youth with small pockets. Having national accreditation and collaboration all around the world, Sakhar IB University is now considered as one of the leading educational institutions of Pakistan. Sakhar IB has always promoted the culture and innovation. कंपनी में खुद से चेंज लाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कंपनी का नाम चेंज हो सकता है, कंपनी का प्रिंसिपल लाइन चेंज हो सकता है, तो इन दैट केस दैट इज अ इवेंट बेस्ड फाइलिंग। इट्स कॉल्ड अ इवेंट as and when needed by the company. It's upon the company, but SSCP does not mandatory ask them for any information. हमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऑलराइट। अच्छा अगर किसी से मिस हो जाती है, कई लोग होते हैं उनसे कंपनी के फॉर्म 1 साल तो वो कंपनी 2 साल नहीं कराया, 3 साल नहीं कराया उन लोगों ने, अब 4थे साल उनको अचानक ख्याल आया कि हमने फॉर्म्स भरने, तो लेट फाइलिंग के साथ फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। लेट फाइलिंग लेट फाइलिंग दैट्स एन ऑप्शन अवेलेबल टू जी, एग्जैक्टली। डू यू चार्ज सम फीस फॉर दैट? लेट फाइलिंग फीस चार्ज करते हैं और वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा जी, एग्जैक्टली। ओके। एसएससीपी की वेबसाइट, हाँ मैंने उसको करके देखा है, उसमें बहुत सारा मटेरियल है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी आदमी को पहली दफा जाके कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए कहां से स्टार्ट करेगा? देखिए व्हेन यू विल लॉग इन टू एसएससीपी वेबसाइट इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। तो देयर इज अ आइकन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। इफ यू क्लिक दैट कंपनी इनकॉर्पोरेशन आइकन, तो यू विल फाइंड whatever I have discussed right on, you will find everything over there. तो सब वहां मिल जाएगा। There is a video over there how to incorporate a company. If you find it difficult, you can watch that video and follow that video and your company shall be incorporated. So आपने step by step पूरी वीडियो है, short videos, long videos, even memorandum and article. Those who want to submit their own memorandum and article, more than 120 different sector samples are available on the website of the commission. 120 sector samples, sector samples, manufacturing, pharmaceutical, real estate, mining, name it and have it. मतलब आपने जो बिजनेस करना है 120 बिजनेसेस के तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सेक्टर्स जो है ना उनके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल हैं। देन देयर इज द promoter guide which contains all the information regarding the company, types of the companies, how to incorporate a company, what are the requirements of the company. It's not only in English, it's in 13 different languages. 13 languages. Not only in the local languages, Urdu, English, Chinese, local languages like Sindhi, Balochi, Punjabi. Not in Punjabi, Pashto, Chinese, Arabic, Turkish, ये आपने फॉरेन German, because we have too much foreign investment in the country, so we to facilitate them so that they can understand the requirements for the company information. We have placed the company incorporation promoter guide in each and every language in different 13 languages. और जो आपकी वीडियोस हैं वो इंग्लिश और उर्दू में मौजूद हैं। इंग्लिश में मौजूद वो उसमें तमाम स्टेप्स मौजूद होंगे। Small videos are also available in Urdu, but the large incorporation video that is available in the English. I think अब जितनी तरक्की हो रही है और जितना लोगों का माइंडसेट बदल गया, हर आदमी तो अब हर वक्त तो नेट के ऊपर बैठा है,
तो अगर वो थोड़ा सा भी टाइम, आधा घंटा भी इसको देख लेगा तो उसको समझ आ जाएगा 10 मिनट्स की वीडियो है विद 10 मिनट्स। इसके अलावा स्टेप्स, रिटन स्टेप्स हैं कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब चेकलिस्ट मेरे सामने चेकलिस्ट अवेलेबल है। लाइक अंडरटेकिंग वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेट ऑफ द अंडरटेकिंग, व्हाट इज द, दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर website. So name it and have it, all the information is available there. Whatever I have discussed in last half an hour, you will find it over there. So वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल भी है। इसके अलावा आपका बिजनेस सेंटर भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी बन गई, फॉर्म्स भी उसने क्या फाइल करने हैं। अब आते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, जिसको वाइंडिंग अप कहते हैं, यानी कि उसकी कंपनी की पैदाइश हुई, उसने जिंदगी गुजारी एंड नाउ द कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स अ क्लोजर, उसके ऊपर अगर आप बता दें कि कैसे, जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी की मौजूदा कंपनी उसने बंद करानी है तो वो क्या करे? देखिए वाइंडिंग अप जो है ना वो डिफरेंट मूड्स है। वाइंडिंग अप है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है कि बंदे ने खुद ही आया और उसने कहा कि बात करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई बंद करवा। और देयर इज, अगर कंपनी के कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ही नहीं, सपोज कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड 20 इयर्स बैक और 10 इयर्स बैक और 3 इयर्स बैक एंड company didn't start its operation and they don't have any assets and liabilities of the company and they want to close this company, that is a company easy exit scheme. That is the most simplest form of the winding up of the company. You just submit some documents for the company easy exit scheme and your name is notified in the gazette and your name is struck off from the register of the companies basically. अच्छा ये बताएं मुझे, कई लोग आते हैं, बात करते हैं हमसे, वो ये कहते हैं कि बस कंपनी रखी हुई है, कुछ काम तो हो नहीं रहा। What do you suggest? लोग बनाते हैं फिर काम नहीं करते, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर काम नहीं है तो कंपनी बंद करवा दें और अपना नाम स्टक ऑफ करा लें एससीपी से? लोग इसलिए भी रखते हैं कि शायद इन फ्यूचर उनको कोई प्रोजेक्ट जो है ना, दे विल कंसीव एनी आइडिया और कोई कहीं क्लिक कर जाए, लेकिन वो डोरमेंट कंपनीज बनती रहती हैं। तो अब जो है ना, डोरमेंसी का भी एक सर्टिफिकेट है हमारा कि आप डोरमेंट कंपनी अगर इनएक्टिव स्टेटस भी ऑब्टेन कर सकती है एक फॉर्म सबमिट करवा के कि सपोज 10 इयर्स तक वो इनएक्टिव रहना चाहती है तो उसके द्वारा करा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो वो उस टाइम के ऊपर वो इनएक्टिव है। लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ लोग होते हैं कि वो लिटरली दे फॉरगेट अबाउट कि उन्होंने कोई कंपनी बनाई भी थी, तो फिर एससीसीबी भी उनको नोटिस इशू करता है। देयर इज अ सेक्शन इन द एससीसीबी। जी बिल्कुल, उनको हम कहते हैं कि वो नोटिस इशू करते हैं और उनके बाद अगर कोई जवाब नहीं देता तो हम कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। कितने अरसे के बाद होता है ये? तो इट्स अ रूटीन मैटर। नहीं, मेरा मतलब था कि एक कंपनी कितने अरसे के बाद उस लिस्ट में आ जाती है जब आप कहते हैं कि भाई जवाब दो, नहीं तो हम खुद तुम्हें स्टॉप। देखिए वो डिफरेंट क्राइटेरियाज है, वो साथ साथ देखते रहते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स, जब देखते हैं कंपनी के कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई डोरमेंट कंपनी है, वो अकाउंट्स अपने सबमिट नहीं करवा रही और फिर उनको वो जो है ना नोटिस इशू करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी बनाई है तो उस पर कुछ ना कुछ काम करें, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे तो डोरमेंसी का सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसका एक फायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो आप डोरमेंट के स्टेटस में होने की वजह से किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन से महफूज रह सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो बहरहाल साइला और उनका ऑफिस जो है एससीसीपी, क्योंकि नॉर्मली जब हम नोटिस सेंड करते हैं तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेंटेन नहीं हो रहे होते, वहां से नोटिस उनको रिसीव नहीं होते। लेकिन कंपनी तो अपना एससीसीपी तो अपना लीगल एक्शन जो है ना वो फिर ले लेती है। फिर लोग उसको रिस्टोरेशन के लिए भी आ जाते हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं था, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, आवर ऑफिस वाज क्लोज, वी वर नॉट इन पाकिस्तान। तो फिर एक रिस्टोरेशन का भी सेक्शन है। जी बिल्कुल, तो रिस्टोर भी जो है ना कंपनी जो है ना। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी है बनाने से लेके उसको चलाने तक और उसको डोरमेंट रखने से लेके दोबारा उसको रिवाइव करने तक और उसको बंद करने से लेके नई कंपनी स्टार्ट करने तक। आई थिंक लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इन द। मुर्तजा, आई सजेस्ट यू कि आप इस तरह के सेशंस डिफरेंट टॉपिक्स के कंपनीज एक्ट के करवाएं ताकि लोगों की जितनी भी अवेयरनेस उनको क्रिएट की जाए और उनके लिए आसानी, क्योंकि एग्जैक्टली जब एससीसीपी के लोग होते हैं तो वो आपको वो वर्जन बता रहे होते हैं जो एग्जैक्टली इंप्लीमेंट होता है। क्योंकि डिफरेंट लोगों से जब बातें सुनते हैं, वर्ड ऑफ माउथ 1 2 3 4 जाता है आगे, तो वो कुछ ना चीज कुछ बन जाती है और उसमें वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती उस इन्फॉर्मेशन। आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। हम क्योंकि जमा पूंजी के सिलसिले में इन्वेस्टर एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है, इसमें हमारी टारगेट मार्केट बहुत डाइवर्स है, तो हम आम आदमी से लेके तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स तक और स्पेशलाइज्ड लोगों तक इसको जा रहे हैं और आई थिंक हम इस आइडिया को जरूर फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट, थैंक यू फॉर हैविंग सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन। कि अब लोगों ने सुन लिया और आई थिंक जो हमारा मकसद है वो ये कि लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो और वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें, आपसे मुराद एससीसीपी है, एससीसीपी के बिजनेस सेंटर से रब्ता करना चाहें तो किन जराए से वो आप तक देखिए, एससीसीपी बिजनेस सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड center for the incorporation of the company from all over Pakistan. And it's based in Islamabad. And it's based in Islamabad at head office, NIC building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, mezzanine floor. So you can interact with us through WhatsApp. When you incorporate a company, so there is a WhatsApp icon. It continuously moves with this system. Wherever you have any problem, you can live
chat with the SCCP officials SCCP officials. at the business center, and you can ask them ke which field, what does this field mean, which entry should I made over here, कोई मतलब what does समझ this नहीं आ रहा mean, उसका। what is this mean, so you can directly talk to us lively. Then there is a email address business.center@sccp.gov.pk. you can also send emails on that इसको एक address. दफा हम रिपीट कर दें। business.center@sccp.gov.pk. थैंक यू। And then you have direct numbers ओके of the business center. These numbers are available on our website. 919-5405 is just like my number. Okay. Then there are different numbers. There are more than 20 lines available. 20 lines available, जो टोल फ्री नंबर्स हैं जिस पे लोग एक्सेस कर सकते हैं आपके हैं ऑफिस और को। they can access to us and they can talk to us directly if they have want to need any information about how to incorporate a company, or they want to know the status of their company incorporation. When they have, after submitting the information, we got too many calls like this ke, madam, I have submitted my application, where is it, what is the status of that application? Though it's a very simple process, on daily basis we registered more than 100 companies. Really? Yes. So from this you can imagine कि how simple, fast and easy is this. नहीं, it clearly shows कि आप लोगों की जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से ही इतना फैसिलिटेशन हुई है। और आज की जो डिस्कशन हुई है, आई एम श्योर साला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान ज़बान में हमारे सुनने वालों के लिए चीज़ें बताई। बिफोर वी क्लोज द सेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन is very critical not only for your personal growth but for the growth of the economy. जो प्रोसेसेस साइला ने बताए, जो चीज़ें साइला ने अब तक आपको एक्सप्लेन की, उनकी पर्सनल लेवल से मतलब बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं, और बिजनेस सेंटर्स जो है वो आपको ना सिर्फ फैसिलिटेट करेगा अगर आप CNIC लेके चले जाएं, बल्कि आपको उस प्रोसेस से जब तक आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आपके साथ साथ रहेगा। वेबसाइट की अवेलेबिलिटी साइला ने बताई, उसके ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं। वीडियोस के साथ साथ आप गाइड्स को भी पढ़ सकते हैं जो कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हैं। शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बिजनेस सेंटर में 20 से ज्यादा टोल फ्री लाइंस हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, वो मौजूद है। सो ऑल दी बेस्ट पॉसिबल जो कि एवेन्यूज हो सकते हैं आपको सिखाने के लिए, आई थिंक साइला ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। मैं एक दफा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर हमसे राब्ता कीजिए। हम अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आपके साथ शॉर्टली शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर listening to our program. दुनिया की बेशतर अक़वाम की मामूलात ज़िंदगी में इल्मी और तालीमी TV चैनल की मुस्तहकम रिवायत फ़रोग़ पा चुकी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस इंतहाई अहम ज़रूरत का इदराक रखते हुए अपना कायदाना किरदार अदा करना चाहा। लिहाजा एक ऐसे वेब चैनल का आगाज़ किया जो सिर्फ़ इल्मी प्यास को बढ़ावा देने और इल्म के मतलाशी नाज़रीन के लिए मखसूस है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वेब चैनल EDU TV हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस विजन की अक्कासी करता है जिसके ज़रिए तुलबा, असातिज़ा, वालिदैन और अवामुन्नास के दरमियान मजबूत और पायदार रिश्ता इस्तवार किया जा सके। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुतअद्दिद मीडिया यूनिवर्सिटीज़ के ताउन से EDU TV पर चंद काबिल ज़िक्र प्रोग्रामों का आगाज़ किया, जिनमें चेयरमैन ऑनलाइन, खुली कचहरी, प्रोफेसर ऑनलाइन, डिग्री अटेस्टेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्कॉलरशिप गाइड और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में मुतअद्दिद मुफीद प्रोग्राम्स शामिल हैं। EDU TV की मीडिया पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ जो कि EDU TV के लिए तालीमी कंटेंट बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, उनमें रिफा यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, ज़ेबिस यूनिवर्सिटी, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
Sakkar IB University has emerged as a beacon of light for the unprivileged, talented youth with small pockets. Having national accreditation and collaboration all around the world, Sakkar IB University is now considered as one of the leading educational institutions of Pakistan. Sakkar IB has always promoted the culture and innovation since its beginning, and initiatives like the establishment of new departments and centers such as Center for Robotics, Artificial Intelligence and Blockchain, Center for Entrepreneurial Leadership and Incubation, Pakistan's first fabrication lab with collaboration of MIT USA are the embodiment of this culture. With a vision to become a world-class university, Sakkar IB University carries the mission to serve community by imparting knowledge through innovative teaching and applied research at the global level of excellence. Sakkar IB University has state-of-the-art infrastructure and facilities including PERN-2 internet connectivity, data center, uninterrupted power supply, backup servers, and several engineering and tech-oriented labs. To further contribute in the economy of Pakistan and minimizing the academia and industry gap, Sakkar IB aims to establish the Nisar Ahmed Siddiqui Technology Park, or Nestec Park. The vision of Nestec Park is to establish a world-class technology park aiming at providing a diverse technology hub and as an important common use infrastructure for technology development across Pakistan. Many leading local, national and international tech companies, SMEs and tech startups will be based at Nestec Park. In addition, it will provide a conducive ecosystem for developing innovative products in 4 different clusters, namely Agritech, Biotech, Edutech, and SmartTech through the collaboration of research centers, universities, industry, communities, and government by adopting the quadruplex helix model. The above clusters will bring drastic change in the economic growth of country by creating more employability and giving platform to the emerging entrepreneurs, investors, and venture capitalists. The Nestec Park will make a substantial contribution to national STI and contribute greatly to the national and local economy. Sakkar has a strategic advantage of connecting all the provinces. Agriculturally rich with cost-effective resources, Sakkar is an ideal location for firms and students, as many universities are within its 50-kilometer radius. They say the future belongs to those who believe in the beauty of their dream, and this dream will soon be realized because future is Nestec Park. My name is Abdullah Ashad. I graduated in computer science from University of Debrecen in 2022. Studying in Hungary was amazing. The teachers were fantastic and I learned a lot. Now I'm working as a software engineer in a top tech company. Thanks to what I learned in Hungary, my degree is recognized worldwide. It gave me great opportunities and I made valuable connections. I recommend this scholarship to everyone. Studying in Hungary gives you top-notch education and a taste of rich culture. It changed my life and it can change yours too. Every word exactly. Then of course the video conferencing facilities were provided to all our universities. Then time came that before COVID we were able to convert 100 universities into smart universities, and not only smart university but safe universities also, and they were linked directly with the safe city so that unfortunately if something happened, so we should have a quick response to save our student, to our faculty, to our staff in our respective university. Ladies and gentlemen, during COVID, you have seen that many even developed countries, they suffered due to this COVID problem, and there was so many damage in education, training, teaching, learning. But alhamdulillah, in Pakistan, we were able, especially in higher education sector, to kind of create some kind of working environment where online education was provided, and based on whatever was previously invested by government of Pakistan through IT ministry, through SNT or through HEC. So alhamdulillah, we were able to pull this bad patch, and there was not a big loss in our education sector. Then after that, when the CPAC started, we were able to get some support from CPAC authority in China, and we have already converted 100, we have created 100 smart classrooms in those 100 smart universities. Secretary Sahab, they are very important, and my honorable member Dr. Jameel Sahab was mentioning that we have recently tested all those 100 points simultaneously. The point is, sir, that like we were discussing in IT ministry, that how to create those boot camps
how to create opportunity that our youth should be given those garnishment part where the missing pieces are, so that they should be ready for the industry. So Alhamdulillah, today we have facility that from HEC Smart Classroom or University of Lahore, Punjab University, or even Karachi or Khuzdar, from any place, simultaneously you can train 9,000 students from one place, and it is going to be very effective and very efficient system. Similarly, so many other good things are happening, and believe me, all those things are happening for you. The government is investing huge amount of resources that our youth should be enabled, you should be trained in the environment where they are going to work in future. So we are proud that Alhamdulillah in Pakistan we have created so many good opportunity, and we are thankful to our partners like Microsoft. Microsoft from decades they are with us, whether it was the 360 there's software available to our youth on those laptop schemes, we always were able to work together, and we have created so many. And similarly, this Imagine Cup, because previously I was here for 4-year vice chairman HEC, so I have already seen 4 Imagine Cup during that time, last year, and now next year, inshallah, we'll be launching today. We are also working together with Ministry of IT, especially when the present minister has arrived. He is an IT person, and he is from university, of course. So we are able to create so many joint venture together, and we are working together, inshallah, and we are now working to upscale the capacity or technical skill of our young people who are graduating from universities, so that they should be able to directly work in the industry. Because whenever we talk with the industry or business people, they always say, no, we have good people in Pakistan, but there is something missing. And that something is, I always say, is the garnishment part, sir. वो जो ऊपर छिड़काव होता है ना, जो ये कौन सी बेकरी है यार, ये ताजीब बनाती है, वरना तो राजा साहब वाला ही केक होता है, या ये जो हमारा सरीना होटल है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, तो दैट इज मिसिंग. अदरवाइज आवर यूथ आर वेरी टैलेंटेड, सर. They have all the capacity. The only missing piece is the gaps in the skill set what industry want and what our university they are producing in our student basically. I believe with this passage of time, with all this innovation, all this technology transformation, we are going to create best environment for Pakistani youth. And you have a huge demand in the market, by the way. Believe me, there were, I think a couple of months back, we invited some Japanese businessmen. And they said, sir, we need 800,000 IT graduate in the next couple of years. Similarly, German government is approaching us, French government, other European countries, even Gulf states. They are asking a huge number of Pakistani youth because we are smart people. You are smart people, and I can bet you that you are not less than anybody in the world, provided you learn those skill set which are required by the industry. Now let me quickly share with you. And I'm thankful to our partner like Microsoft, because Microsoft is always there. You might have seen that in last year we were able to get some online course material available, and Microsoft was the first one who offered us 200 courses, online courses with certification cost, free of cost, sir, and we have provided those resources free of cost to all students of our university. Have been engaged in different capacity building and research and development activities, initiatives of Higher Education Commission of Pakistan since last more than a decade, I guess. I'm also delighted to really receive and acknowledge the active support of Gibran Jamshed, whom I know since last couple of years as well in different roles and capacities. So I'm really delighted to see Gibran, you as well at this event representing Microsoft. I'll only say a few words. I mean, I'll try to save time so that we could listen to Gibran, what he has to say about this partnership and the benefits and initiatives Microsoft is going to bring along in this partnership for improving the cause of education, one, and secondly, actually further improve the innovation and creativity amongst the young boys and girls actually enrolled in higher educational institutions of Pakistan. And and alongside, it would provide furthering their skill level and improving their
IT skills, I would say, by providing state-of-the-art and internationally accredited programs and courses using which these graduates or even the enrolled students can improve their IT skills, their understanding, and can then be really a good prospective actually member of the IT community worldwide and globally. And thirdly, obviously, an implied benefit of engaging in such an event is having access of licensed state-of-the-art platforms for students and faculty members both, which would be provided to this community free of cost, and the cost obviously is being borne by Government of Pakistan through HEC and through Microsoft partnership. And finally, an exciting event most of us are aware of, the Imagine Cup. So today we'll be launching actually this initiative again for this year, where hundreds of boys and girls, graduates and graduating students from around the world and even from Pakistan actually attend the different activities of the Imagine Cup and then bring laurels back for the country. So looking forward to really having more flourishing and productive partnership with Microsoft, engaging with Microsoft for other academic and capacity building activities as well in due course of time. I thank you all for sparing moments, especially my colleagues, the Vice Chancellors, the Honorable faculty members and students who have traveled from other cities of Pakistan and from within Islamabad as well to attend this event. I thank you all on behalf of Higher Education Commission as well, and thank you, Microsoft, again, for partnering with Higher Education Commission of Pakistan. God bless us all. Pakistan Zindabad. Thank you for sharing your words with us, Dr. Ziaul Qamar Sahab. Using technology is important to make economy grow. Making them the workforce more competitive and creating jobs, the most important way we use technology to make education better. Now, let's hear from Mr. Gibran, Country Principal Officer and Regional Education Lead at Microsoft, about how working with the Higher Education Commission is helping to make education more digital and modern. Assalamu alaikum. Perfect. Can we roll the slides? Okay. वहां पे नजर आ रहा है, वहां पे नहीं आ रहा जी. So guys, just give like 20 seconds. We're good to start. Let's go from slide 1. Acha ji, wait. Acha, meanwhile we are sorting out the slides ka jo issue hai. I know them by heart, so I'm good to start my presentation. First and foremost, thank you for coming around. I can see a lot of students. Some of them have not gotten the seat. Apologies on this one. But the best thing is you have made it over here, and we want to make sure that you take certain key takeaways from this one. So I'll request everybody in the hall to put up a round of applause for these students who have shown up over here at HEC. Right. So I'll formally start my presentation. Honorable Chairman, Higher Education Commission, respected Vice Chancellor Saab, Saiban, Executive Director Saab, Member IT Saab, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. So today we are living in interesting times, right? Where technology has got a massive impact on society and economy. अगर आप टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे और इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो आपको बड़ा डिफरेंट नजर आता है. In 21st century, if you take a look,
you would find freelancers earning more than people who are employed full-time. You would find a world where Uber doesn't own any of the taxi or the car by itself, and still it's the largest taxi company on the planet. Same goes for Airbnb, जिसकी अपनी कोई hotel chain नहीं है. You talk about Alibaba and Amazons of the world, largest shopping malls without any brick and mortar infrastructure. And the list of examples go on and on. Netflix and Prime, they don't own cinemas and theaters, right? And still, they are leading the race. This is what 21st century is all about. And when you talk about this 21st century, in last 12 months, I have not had any conversation जहाँ पे artificial intelligence या artificial intelligence के role के ऊपर बात नहीं की गई हो. There are myths, there are misconceptions, there are facts which exist in the society when you talk about artificial intelligence. I don't have to look at the slides, and I can share with you कि 1956 में जब पहला concept paper आया AI को लेके, and at that point in time we thought that it would change the game. At that point in time, अगर आज मैं उस पिछले 70 साल पहले की AI को देखूं, तो to me it looks like a weak AI system, because it was all embedded with decision supports and logics and all these kind of things. But then we worked long and long on these kind of systems. अगर किसी ने आज से 30 साल पहले भी कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है तो उसने AI पढ़ा है, प्रोलॉग जैसी इन्वायरमेंट्स के ऊपर उसने डेवलपमेंट की है. Fast forward to 1997, early 2000s, I personally experienced machine learning environments, right? अगर किसी ने अपने बैचलर्स या मास्टर्स जो हैं 2000s के बाद किए तो machine learning environments को उन्होंने देखा है. And when you came across with these machine learning environments, supervised and unsupervised learning, right? आपको लगा कि ये AI है, पिछले तो weak AI थी, ये strong version of AI हमारे पास है. और machine learning क्या कर रहा था? Machines were able to predict and machines were able to classify on things, right? ये machine learning की capability थी. We were very happy with that, and then again people thought about कि जी machines would take over the jobs and humanity को challenge है, and the list of things go on and on. Till the point, 20 years fast forward, deep learning came into an action where machines got the power just like humans. They could translate, they could see a video or an image, they could interpret. वो एक म्यूजिक को सुन के बता सकते थे कि जी क्या जॉनरा इसमें प्ले हो रहा है, who is the singer behind. ये वो सारे काम थे जो इंसान करते थे अपनी जिंदगी में, विजन को, स्पीच को लेकर, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, ट्रांसलेशन को लेकर, and the list of things go on and on. And even you talk about जब भी AI की बात होती है, you don't miss one use case, जो कि driverless cars का, right? आप हमेशा driverless cars की बात करते हैं. Deep learning is a fundamental technology when it comes to driverless cars in the world of today. और 2016-17 and everybody was on deep learning until the point we saw another capability coming out of machines, generative AI. ये fourth आपका जो pillar आया, which really became a game changer. And then nobody is talking about anything else. People are only talking about AI. Because machines जो हैं वो information को देख के आप comprehend नहीं कर रही, classify नहीं कर रही, वो information और content को create भी कर रही हैं. वो movie create कर सकती है, वो एक painting create कर सकती है. आप assignments कर रहे हैं, teachers are not happy with ChatGPT and all of this. So this is a power of machines. Now there are two ways to look at it. One is to embrace that change, and the other way around is that you should take a defensive mode. And I'm sure in Pakistan we are not taking this defensive mode because we are capitalizing on a future opportunity. एक individual, when they get a skill and they earn good, they change the value system and the living for the entire family. और आप आज अगर stats देखें, मैं 2-3 stats आपसे share करना चाहूँगा. If you take a look at the stats, मार्केट में जो एनालिस्ट आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि $15 ट्रिलियन का इम्पैक्ट अगले 3 से 4 साल में AI, जनरेटिव AI लेकर आएगा सोसाइटी पे. $15 ट्रिलियन is huge. There is immense possibility for all of us. पाकिस्तान में it's a huge youth bulge, right? 65 to 70% जो है आपकी population youth है. And then what we are talking about, we are looking out for opportunities of the future. Opportunities of the future कहाँ पे exist करते हैं?
पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. We are talking about 150 million jobs which will be created in days to come when you talk about the fourth industrial revolution. अच्छा, fourth industrial revolution का किस-किस को पता है? Right, many hands are up. How many of you know are aware of fifth industrial revolution? I think 2-3 hands are up. So fourth industrial revolution is all about utilization of these technologies like cybersecurity, artificial intelligence, and quantum computing, and all these things into the daily life, where there is a blur in the cyber physical systems. Technology is doing a job of a human being. आप एक चैटबॉट से चैट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक इंसान से चैट कर रहे हैं, पर वो इंसान नहीं है, वो चैटबॉट है. This is where fourth industrial revolution is. और उसमें आप एक फीलर ले रहे हो, आपको ये फीलर मिल रहा है वहां पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इस वक्त कि probably computer would take away my job, AI would take away my job. But on the other hand, when you go and you take a look at the statistics which are published by World Economic Forum, वो आपको ये बता रहा है कि जी बिल्कुल there are jobs which will be taken away by automation and AI. There are 85 million jobs in next 2 years down the road which will be taken away, wiped off by the advent of AI. But on the other hand, 85 million jobs जा रही हैं, 97 million नई jobs create हो रही हैं. So हम उसको क्यों नहीं देख रहे कि जो नए roles, नई possibilities, नई opportunities हमारे सामने आ रही हैं. And when I take a look at these stats, it draws me back to the second industrial revolution. Second industrial revolution में क्या था? Early 1900s, markets like US, they were driven by horses and carts. And when motor cars came in, horses and carts were gone. उनके साथ there were millions of people who had the occupation vested with this horses and cart industry. वो उनको सही कर रहे थे, उनका खाना बना रहे थे, उनको चला रहे थे, 10 काम कर रहे थे उसके अराउंड. When automobiles came on the road in early 1900s, and by 1925 there was no single horse running on the streets of New York for that matter. तो क्या हुआ? वो जो लोग सारे अपना रोजगार तलाश कर रहे थे horses and carts के साथ, अब उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज और नई इंडस्ट्री सामने आई. जब गाड़ियां आई तो उनको चलाने वाले भी लोग चाहिए थे. अच्छा जी, it's back, right? So I could quickly move ahead so that you can also see we made these some slides. किस तरफ करना है इसको? It's not working maybe. Anyways, so I'll continue with my talk and I'll take 5 more minutes. The teachers were fantastic and I learned a lot. Now I'm working as a software engineer in a top tech company. Thanks to what I learned in Hungary, my degree is recognized worldwide. It gave me great opportunities and I made valuable connections. I recommend this scholarship to everyone. Studying in Hungary gives you top-notch education and a taste of rich culture. It changed my life and it can change yours too. Sakaraibi University has emerged as a beacon of light for the unprivileged, talented youth with small pockets. Having national accreditation and collaboration all around the world, Sakaraibi University is now considered as one of the leading educational institutions of Pakistan. Sakaraibi has always promoted the culture and innovation since its beginning, and initiatives like the establishment of new departments and centers such as Center for Robotics, Artificial Intelligence and Blockchain. Slide पे मेरी presentation में है. Go on the last slide, please. Right, जी ये वाली second last sheet. So इस पे शायद लोगो सही build नहीं हो रहे मेरे ख्याल में. But the first program is Microsoft Learn. Microsoft Learn कितने लोगों ने use किया है? learn.microsoft.com, thank you. I think काफी लोगों ने use किया है. और Microsoft का जितना भी training है, content है, curriculum है, faculty के resources हैं, student के resources हैं, they have all accreditation and collaboration all